Hello, myself Prabhakar Pramod Jha, a practicing registered valuer, practicing social auditor and IBC law consultant. मैं प्रभाकर प्रमोद झा एक प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर सोशल ऑडिटर एंड आईबीसी लॉ कंसल्टेंट. This is a third video on social auditor. In this video we are going to learn chapter number 9, 10 and 11. ये थर्ड वीडियो है. आपने अगर फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो अटेंड कर लें, देन अटेंड दिस वीडियो. अगर आपने इससे पहले के दो वीडियो सोशल ऑडिटर के एग्जाम प्रिपरेशंस वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 नहीं देखा है तो वो देख लीजिए. एंड ये थर्ड वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 9, 10, 11 के इम्पोर्टेंट्स, जो भी टॉपिक के इम्पोर्टेंट्स है रिलेटेड टू एग्जाम प्रोस्पेक्टिव्स, वो मैं कवर करूंगा इस वीडियो में. So chapter number 9, disclosure norms, reporting requirement by the social auditor and penalties. तो जो एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो देखना है हमें कि जैसे एक कोई भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी एनजीओ लिस्ट होती है तो उसको क्या क्या डिस्क्लोज करना होते हैं. कुछ डिस्क्लोजर जो है एनुअली होंगे, कुछ क्वार्टरली होंगे, कुछ इवेंट वाइज डिस्क्लोजर होंगे. तो क्या एक एनजीओ को जहाँ जो लिस्ट कर रहा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, उसका नाम क्या है? सोशल एंटरप्राइजेस. सोशल एंटरप्राइजेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एनपीओ एंड एफपी. NPOs are going to be listed on social stock exchange and FPs are going to be listed on main board, SME platform or innovator growth platform, anyone. तो NPO लिस्ट हो जाएगी SSC पे और FP मेन बोर्ड पे लिस्ट हो सकती है या फिर SME प्लेटफॉर्म या इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, डिपेंड अपॉन देयर सिक्योरिटीज. एनपीओ 0 प्रिंसिपल इशू कर सकता है, म्यूचुअल फंड इशू कर सकता है या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटी नोटिफाई कर रही है सेबी तो वो इशू कर सकता है. इस चैप्टर में देखेंगे कि जो भी एनपीओज एसएससी पे लिस्ट हुए हैं उसके क्या क्या डिस्क्लोजर है. what disclosure need to be done by these NPO when they are listing on SSC, Social Stock Exchange. SSC meaning, what is the meaning of Social Stock Exchange? A separate segment of recognized stock exchange having a nationwide terminal. So separate segment of BSE, NSE. What are the disclosure requirement? So minimum disclosure requirement as per regulation 292 K1 of ICDR regulation. Each SSA, as each SSC, they have to frame a governing council. सो हर एक एसएससी को एक गवर्निंग काउंसिल बनाना होगा जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग काउंसिल होगा. Then SSC shall ensure the document contain the following minimum disclosures. So disclosures में SSC ने बताया होगा कि क्या क्या चीजें लगेंगी. तो एक एनजीओ को विजन देना होगा, उनके टारगेट्स, बेनिफिशियरी कौन कौन है, व्हाट आर द टारगेट बेनिफिशियरीज ऑफ एनजीओ, व्हाट इज द विजन, व्हाट आर द स्ट्रेटजी, strength, weakness, threat, opportunities. Then governance, the body, governing body, composition of boards. So yes, सारे details. Then the meeting holds, all these details. Then management, KMPs, HR, finance people, their detail needs to be given. How many staffs are there? How many volunteers are there? कितने staff है, कितने volunteers हैं? Then operations details. Then finance details, financial statements as per section 2 clause, financial statement defined under section 2 clause 40 of Companies Act 2013. Compliance,
So compliance is income tax returns, notice received any, if any material irregularity, then also need to be reported. Then certain documents like for trust deed for Section 8 company, MOA, AOA, and for societies, bylaws. तो ये सारे कुछ important documents भी देने होंगे, details. Trust के लिए trust deed, Section 8 companies के लिए MOA and AOA, and bylaws, then income tax certifications, FCRA certificates, Foreign Contribution Regulation Act, then social impact in terms of parameters stipulated by SEBI. What are the past social impact created in society? Then risk, if any, faced by, and what are the procedure adopted to mitigate the risk? So all these details need to be incorporated and submitted to the social stock exchange. So minimum requirement of, this is a minimum initial requirement for NPOs. Clearly written NPOs. So this you have to remember, this you have to remember. Then out of this, just you read, you don't have to remember all these. SSC under the guidance of Social Stock Exchange Governing Council. So this is also important. Now, disclosure for NPO, non-profit organizations. Every NPOs need to disclose certain disclosure, annual disclosures. So annual disclosure within a 60 days from the end of financial year. So it's very important for your exam perspective. Try to remember. ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्क्लोजर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्लोजर, कौन सा डिस्क्लोजर है? ये एनुअल डिस्क्लोजर है. कब हो जाना चाहिए? विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. Again, in annual disclosures, whatever we have read, name of the organization, location, headquarter of the operational office, mission, vision, mission, purpose, organization goals, outreach of the organization, number of direct, indirect beneficiaries, stakeholders involved, scale of operations, only employee involved or volunteers are also involved. All these details. Then the top 5 donors or investors. Donor is for NPOs and investor is for FP. Details of top 5 program disclosed in the period. List of top 5 programs budget wise. So all these details need to be given under annual disclosure. Annual disclosure need to be done within a 60 days of end of the financial year. ये हमें एनुअल डिस्क्लोजर में ये जनरल डिटेल्स डालनी है हर एक एनपीओस को, और ये विद इन 60 days हो जाना चाहिए. Now disclosure by social enterprises. In social enterprises, it is include both NPO also and FP also. NPO include trust, societies, NGO, and trust society, Section 8 company, and FP includes companies, LLPs, HUF, partnership firm, etc. In sole proprietorship also. So under this, this is very important. Event-based disclosures. So events, you have to remember these events are important. Event-based disclosure. So event-based disclosure need to be done as soon as reasonably possible, but not later than 7 days or within such period as may be specified by SEBI. जितना जल्दी हो सके इवेंट, जैसे कोई भी इवेंट हुआ जो मटेरियल है उसको डिस्क्लोज करो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को. अगर
कितने दिन में हो जाना चाहिए? एज अर्ली पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 7 days, बट नॉट लेटर देन 7 days. ट्राई टू रिमेम्बर, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट. Don't get confused. This is AIR, Annual Impact Report. Earlier we have studied annual disclosure. So annual impact report need to submit social enterprises. Social enterprises include NPO also and FP also. But annual disclosure need to be done by only NPO within 60 days of end of the financial year. But annual impact report within how many days? Within 90 days. End of the financial year. Please try to remember this annual impact report. If you are watching this video, then you need a hard copy of this book, or you should having at least a soft copy of these books, so you can highlight, you can mark the important. अगर आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी है, जैसे आप कंफर्टेबल हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मार्क करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ये आपको मार्क कर लेना है आपके एग्जाम के लिए. ओके. And AIR shall capture qualitative and quantitative aspect both. So annual impact report कितने दिन में होना चाहिए? Within 90 days. Within 90 days from end of the financial year. Within 90 days. Annual disclosure within 60 days. Event-based disclosure as soon as possible, but not later than 7 days. Now, statement of utilization of fund. Statement of utilization of fund under regulation 91F. Please try to remember of LODR regulations. NGO raise the fund. Then this is for NPOs. This is for NPO. Suppose NPO raise the fund, then where they have applied this fund, whether they have applied this fund as per the object or not. So one report is required, utilization of fund. NPO ने जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके फंड लिया सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो फंड उसने कहाँ यूटिलाइज किया भी कि नहीं किया, उसका एक रिपोर्ट देना होगा. और ये रिपोर्ट कितने दिन में हो जाना चाहिए? विदिन 45 days फ्रॉम द end of quarter. Within 45 days from the end of the quarter. This is very important. In this report, what are the details need to be incorporated? How much money raised, category wise, how much money raised, how much money utilized, and how much money is still unutilized. So 3 details need to be given. कितना पैसा रेज किया, कितना उसमें से यूटिलाइज हुआ, और कितना अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है जो अनयूटिलाइज है. ये एक रिपोर्ट आपको देना है. इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रिपोर्ट. कौन से रेगुलेशन में? 91F. एंड इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, देन ये याद रखना है. पेनल्टीज अंडर penalties under section, penalty under SEBI Act 1992. So SEBI Act passed in 1992. So under SEBI Act, under section 15A, penalty of failure to furnish information and return applicable to intermediary when they fails to furnish any document, return report to SEBI, or file false or incorrect, incomplete information. Minimum penalty. तो ये आपको
सेबी की जो भी एनजीओज है, अगर उसकी जो ड्यूटी है फर्निश करने का रिपोर्ट, जो भी सोशल एंटरप्राइजेस है, जो भी ड्यूटीज है, कोई भी इंटरमीडियरी अगर अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता है तो उसके लिए एक पेनल्टीज है. मिनिमम पेनल्टीज नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज but may be extend to 1 lakh rupees for each day's default during which such failure continue. So minimum is 1 lakh rupees. You have to remember 1 lakh, and 1 lakh every day is increasing till the failure continues. तो आपको जो रिपोर्ट देना है आप दे दो. फॉल अगर रिपोर्ट नहीं सबमिट किया सेबी को, या फिर फॉल्स रिपोर्ट सबमिट को किया, या रिटर्न्स कोई फेल करना था वो नहीं किया, तो 1 लाख रुपए का मिनिमम पेनल्टी है. और जितना दिन ये डिले होगा या फेलियर होगा वो 1-1 लाख बढ़ता जाएगा. और ये बढ़ के मैक्सिमम पेनल्टी कितना होगा? 1 CR. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस 1 लाख एंड 1 CR, वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर रूल 15(1) and 15(2) सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 and security contract regulations rules 1957. Securities is defined under this act only, Security Contract Regulation Act 1956, and this is the rules, Security Contract Regulation Rules 1957. Under these rules 15(1), every broker, member of stock exchange means member means broker, member of stock exchange means broker, need to require certain document for 5 years. So under rule, how many years? 5 years. Under this rule, 15(2) rule, under 15(1) 5 years, under 15(2) how many years? 2 years. So what are the document broker need to maintain for 5 years? broker को क्या क्या maintain करना है 5 years के लिए? रूल 15(1) में 5 years बोल रहा है, रूल 15(2) में 2 years बोल रहा है. अब ये जिम्मेदारी किसकी रिकॉर्ड करने की? ब्रोकर की. तो क्या क्या रिकॉर्ड करेगा ब्रोकर 5 years के लिए? तो ये सारे डिटेल्स जो है, जिसमें सौदा बुक है, रजिस्टर ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लाइंट लेजर्स, जनरल लेजर, जर्नल्स, कैश बुक, बैंक पासबुक्स, all these need to be recorded for 5 years. Then for 2 years क्या क्या ब्रोकर को मेंटेन करना है? What the broker will maintain for 2 years? Members contract book, then counter foils or duplicate contract notes, or written consent of clients. So these 3 details: member contract book, then counterfoils or duplicates contract note issued to the client, and third written consent. तो ये 3 चीजें ब्रोकर को 2 साल के लिए मेंटेन करना है. मेंबर का कॉन्ट्रैक्ट बुक, और कोई डुप्लीकेट या काउंटरफॉइल जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मिसिंग की वजह से दूसरा कोई इशू किया गया, या फिर थर्ड जो है रिटन कंसेंट, जो क्लाइंट का रिटन कंसेंट है उसके बेसिस पे ट्रेड जो किया है ब्रोकर ने, जो ऑर्डर दिया है, तो रिटन कंसेंट भी मेंटेन करना है. So now you can attend these MCQs. Now chapter number 10. So under chapter number 10, we are going to learn STT, capital gain, deduction under ATG, and exemption to social enterprises. Under which section we get the donations? Under Income Tax Act, ATG. This is also important. Please try to remember. NPU get the funds from 4 sources: individual donations, contribution under FCRA, CRSR grant, and grant available from government schemes. This is also important. Now STT, security transaction tax. Security transaction tax is levied on sale and purchase of securities. This is very important. Other than debt securities or debt mutual fund. So up to this, STT is levied on
Sell and purchase of security other than debt security or debt mutual fund. Okay. STT is not charged on debt securities. Now the rates. Purchase and sale of equity shares. This is delivery based. So delivery based STT rate is 0.1%. Chargeable on sell and purchase. Both buyer and seller will pay. तो दोनों के ऊपर चार्ज होगा, बायर एंड सेलर पे, सेल एंड परचेज दोनों पे लगता है एसटीटी 0.1%। ये क्या है आपको याद रखना है, डिलीवरी बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड में क्या होगा, बायर एंड सेलर दोनों पे करेगा। नाउ इंट्राडे, अब सेम सेल परचेज कर रहे हैं बट इंट्राडे, आज ही खरीद रहे हैं आज ही बेच रहे हैं। डिलीवरी क्या होता है, T+2 में आपको जब डिलीवरी मिलेगा शेयर्स, आप होल्ड करोगे इस शेयर को, ये आपका डिलीवरी बेस्ड हो गया। इंट्राडे में आज ही हम खरीदते हैं और आज ही बेच देते हैं। यहाँ पे क्या है, एसटीटी रेट, ये रेट है, और ये किस पे लगेगा, सेलर पे लगता है। सेल एंड रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यहाँ पे सेल रिडेम्पशन हो रहा है, परचेज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेल रिडेम्पशन, यहाँ पे ये रेट लगेगा और सेलर। तो आपको इंट्राडे एंड म्यूचुअल फंड के रिडेम्पशन में देखिए सेलर को चार्ज हो रहा है, एंड डिलीवरी बेस्ड में बायर एंड सेलर। सो ऑल दीज three are very important. Please try to remember. Now capital gain. So capital gain, whenever we are generating any capital gain, then we have to pay a tax. Again, it will be short term or long term, depend upon the period of holding. तो देखिए, जब भी हम कोई खरीद करके बेचते हैं, कुछ पीरियड होल्ड करके, चाहे इक्विटीज हो या कोई भी दूसरा असेट्स हो, तो हमें कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और टैक्स अकॉर्डिंगली लगेंगे। इक्विटी के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म कैसे क्वालिफाई होगा, हेल्ड मोर देन 12 मंथ, हेल्ड मोर देन 12 मंथ, दैट मीन्स अप टू 12 मंथ इज शॉर्ट टर्म, up to 12 month is a short term. If we are holding the shares or equity shares or equity oriented funds, then the long term, after when we are holding more than 12 months, up to 12 months short term. For debt and debt oriented fund, when we are holding more than 36 months, more than 36, that means up to 36 is a short term. जो हम शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 12 महीने से ज्यादा होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म आएगा, 12 महीने तक होल्ड करेंगे या उससे कम तो शॉर्ट टर्म। डेट और डेट ओरिएंटेड फंड मोर देन 36 मंथ अगर होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आएगा, कैपिटल गेन। एंड अगर अप टू 36 मंथ होल्ड करेंगे या उससे कम तो शॉर्ट टर्म। नाउ टैक्स for short term capital gain, 15% plus surcharge and cess. Short term capital gain is 15% plus surcharge and cess. Okay. If STT is paid, then STT means security transaction tax, then only the 15% plus surcharge and cess. If STT is not paid, then 15% plus applicable surcharge and cess. If STT is not paid, then as per marginal rate, applicable marginal rate, applicable slab rate in which slab you are falling. अगर आपने STT पेड किया है तो 15% प्लस सरचार्ज एंड सेस। अगर STT नहीं पे किया है तो आपका जो भी मार्जिनल स्लैब रेट में आप फॉल करते हो उसी स्लैब रेट में आपको लगेगा। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so STT, if paid, then short-term capital gain 15% plus
applicable surcharge and cess. And if STT is not paid, then if STT not paid, then as per applicable slab rate. Now, long-term capital gain. Long-term capital gain, when the capital gain is more than 1 lakh rupees, more than 1 lakh rupees, up to 1 lakh, there is no tax on capital and long-term capital gain. But if the capital gain is more than 1 lakh, जब 1 लाख से ज्यादा आपका capital gain, long-term capital gain हो और STT paid किया हो, if STT paid, then 10%. 10% plus applicable surcharge and cess. If STT paid. If STT not paid, then 20% with indexation benefit and 10% without indexation benefits. Okay. Now, deduction under 80G of Income Tax Act. So, under which section we will get the deduction? 80G of Income Tax Act. Registration number is very important for the NGO. If the donation is made while section 80J registration is not valid, then the donation would be not eligible for deduction. अगर आप डोनेशन देते हो किसी एनजीओ को और उसका 80G रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है, तो डोनेशन एलिजिबल डिडक्शन के लिए नहीं होगा. Now, this is very important. Deduction under 100%. When you are doing deductions, you will get 100% deductions under what categories? So you have to remember. आपको याद रखना है ये नाम्स कहाँ पे आपको 100% deductions मिलने वाले हैं without any qualifying limited. तो नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड. देखो ये सब याद रहेंगे, बट ये याद नहीं रह पाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर. नेशनल स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल. सो ये जो भी नाम है यहाँ पे वो आपको याद रख लेना है एज इट इज. यू हैव टू रिमेम्बर. इस फंड में अगर डोनेशन होंगे तो 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिटेड. 50% डिडक्शन कौन कौन से फंड में मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉप रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड. ये आपको दो याद रख लेना है. जो यहाँ पे दिया है लिस्ट में, यहाँ पे 4-5 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, ये एज इट इज आपको याद करना है. Then donation with 100% deduction, but qualifying limit is 10% of adjusted gross total income. This is for donation made to local authority, government to promote family planning, and donation to Indian Olympic Association qualify for deductions. तो यहाँ पे आप जो भी कंट्रीब्यूशन करोगे उसके आपका क्वालिफाइंग लिमिट कितना है? 100% डिडक्शन. Qualifying limit 10% of adjusted gross total income. 50% deduction up to available up to 10% of adjusted gross total income qualifying limit. So ये किसके लिए? ये भी local authority and government to utilize any charitable purpose other than promote family planning. तो ये family promote family planning के लिए ये है. other than promote family planning के लिए कोई भी charitable purpose के लिए यूज कर सकते हैं. Other than promoting family planning will qualify under this. तो याद रख लेना आपको. Any sum exceeding rupees 2000 when we are giving in cash will be not be allowed. So other than cash, more than 2000 rupees we have to pay. Otherwise we will not get the deductions. So cash allowed up to 2000 rupees, and other than cash we have to pay when we are giving a donation more than 2000. जब हम 2000 तक कैश डोनेशन दे सकते हो, अब 2000 से ज्यादा दे रहे हो तो अदर देन कैश देना होगा आपको. और जिस ईयर में आपने पे किया है उसी ईयर में आप क्लेम कर सकते हो. आप जो है एक ही डोनेशन को बार बार क्लेम नहीं कर सकते. अगेन, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर? डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए क्लेम करने के लिए? तो डेट एंड रिसिप्ट ऑफ
नंबर ऑफ रिसीट्स, तो ये सारे आपके रिसीट्स में जो भी डोनेशन रिसीप्ट है उसके अंदर कंटेन होना चाहिए। डेट ऑफ रिसीप्ट, नंबर ऑफ रिसीप्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ एनपीओस, नेम एंड एड्रेस ऑफ डोनर, amount, how much amount donated in words and figure both, registration number of trust given by the income tax department, then PAN of donor donee, financial year in which donation was refused and type of donation, ये आपके receipts में होना चाहिए। So whenever we are applying for fresh registration under 12AB, we are applying with any NGO is applying with the income tax to get the registration under 12AB. 12AB में registration लेना है और वो वैलिड कितने के लिए रहेगा, तो पहला जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन मिलेगा टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, उसका वैलिडिटी 3 ईयर है एंड सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी इज 5 ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अगर इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन ले तो कोई भी एनजीओ टैक्स बेनिफिट के लिए, तो वहां पे आपको मिनिमम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जो टेम्पोररी होगा 3 ईयर के लिए होगा और सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 5 ईयर्स। These are the details need to be maintained by NCO. Donation certificate is issued under Form 10B. Try to remember. %85% of the exemption from income derived from property held by NPO. Properties से जो भी income होता है, अगर कोई NPOs होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी, उससे जो भी इनकम आता है वो एग्जेम्पशन कब मिलेगा आपको? व्हेन यू विल गेट द एग्जेम्पशन व्हेन यू आर अप्लाइंग 85% ऑफ द इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स द एनपीओ ऑब्जेक्टिव। सपोज इन सम ईयर you are not able to apply this, then in next 5 years, maximum 5 year you can accumulate. So this is very important. If application was below 85%, then you have to give the reason why you are not applying. So up to 5 year you can accumulate. So whatever income NPO is generating, कोई भी NPO का प्रॉपर्टी है, वो उसके पास assets है, अगर वो कुछ जनरेट प्रॉफिट कर रहा है तो उसको प्रॉपर्टी से कुछ इनकम आ रहा है तो उसको हर 85% ऑफ इनकम उसको जो भी एनपीओ का ऑब्जेक्ट है उसमें यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अगर नहीं यूटिलाइज करता है तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड 5 ईयर तक ये एक्यूमुलेशन कर सकता है। चैप्टर 11 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है। अंडर दिस लॉ सिक्योरिटी इज डिफाइंड these 3 you have to. Central government regulatory jurisdiction over stock exchange through the process of recognition, continued supervision, contract of security and listing of securities. So now this central government given a power to SEBI. Now the SEBI will regulate this industry. SEBI Act 1992, their object is to protect the interest of investors and promote the financial capital securities market. So you can go through once. Prior to SEBI, capital controller of CCA was there, and after the scam of 1992, SEBI came into the pictures. हर्षद मेहता स्कीम के आने के बाद से अपने गवर्नमेंट हम लोगों ने रियलाइज किया कि कैपिटल मार्केट के लिए एक सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए, और वैसे भी हम लोग एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1991 में आ गया था, तो हमें ग्लोबल की तरफ जा रहे थे, तो हमें एक कैपिटल मार्केट के लिए रेगुलेटर चाहिए था, तो हम लोगों ने सेबी को लाया। Depository Acts passed in 1996. We have already discussed in the first video, so here we will not invest much time here.
So after the Depository Act 1996, we have started holding a shares in a demat mode. There are two depository, NSDL and CDSL, and their agent's name is depository participants. SEBI stockbroker regulations. So under these regulations, SEBI will regulate the broker. So every broker need to maintain a high standard of integrity, act with due skill and care, not indulge manipulative, fraudulent, deceptive transaction, not to create a false market, either singly or in concert. तो अपना जो भी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है ब्रोकर फॉलो करेंगे, मार्केट को अब्यूज नहीं करेंगे, मार्केट में फॉल्सली कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं करेंगे सिंगली या फिर कंसर्ट और लोगों के मिलके. जब भी प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So under this, you have to remember this regulation 2G of SEBI insider. Insider means a connected person or possession of having access to unpublished price sensitive information. So this you have to remember. So if any person is doing that, any person that having a that person is connected person or having a unpublished price sensitive information, that is called insider. Insider is not a problem. When the insider is doing a trading, passing the information, and based on that, if any person is taking an undue advantage of the market, then they are violating this law, provision of insider trading. And Prevention of Money Laundering Act 2002. So these 2 points you have to read. No. So every intermediary need to record for banking companies, financial institution, intermediary, maintain the records of transactions, high volume transactions for 5 years. These 5 years are very important. Any suspicious transactions also they will record. Business relations with the client. So 5 year is a crux. SEBI fraudulent and unfair trade practices. So fraud is fraud. Whenever any fraud words comes, then under which regulations? So SEBI prevention of fraudulent and unfair trade practices. So any willful misrepresentations, suggestions of fact which is not true, active concealment of fact, promise made without intention of performing it, a representation whether true or false, made in a reckless and careless manner. तो ऐसा कुछ भी होता है तो ये क्या है? फ्रॉड है. Okay. So whatever the important I have given you, that you have to do. This fraud, important. Then, so fraud defined under which regulations? So you have to remember these regulation 4. Under this Prevention of Money Laundering Act 2002, crux is 5 years. You have to remember all the intermediaries, banking, financial institutions, they need to record these data for 5 years.
और वो कौन से डेटा रिकॉर्ड करेंगे? बैंकिंग, जब भी कोई ट्रांजेक्शन बड़ा होता है या एक लिमिट दिया हुआ है आरबीआई ने, इस लिमिट के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे इसको इतने पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको मेंटेन करना होगा।